Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, last time we discussed about the geometrical optics. We talked about the laws of reflection. We talked about the laws of refraction, and I hope that you have understood them. If at all you have any difficulties, please feel free to talk to me on the phones that I have given to you, and I will be glad if you give a call and you put up your problems that you are facing, if any. Today's topic is about total internal reflection. Please note these words that I am repeating. The words that I am using are total internal reflection. Reflection is the phenomena in which a ray of light, when it strikes the boundary of the second medium, it bounces back into the same medium. So that bouncing back into the same medium is reflection. Now this phenomena of total internal reflection is a phenomena in which a ray of light, when it is traveling in a denser medium, enters into a rarer medium. Now this is an example of a ray of light which is traveling in a denser medium, say glass, and it enters into a rarer medium which is air. Then you see that the angle of reflection is the angle of refraction is more, and it is bending away from the normal. You have the first thing that you have to remember is that when a ray of light is traveling in a denser medium and enters into a rarer medium, then it bends away from the normal. From denser to rare, a ray of light will always bend away from the normal. यानी normal से उस point of incidence के ऊपर जो 90 का ज़ाविया बन रहा है उसे दूर जा रही है. दूर का ये मतलब है कि ये इसका path था और इस path से इधर होगी. So it is going away from the normal. Normal के नज़दीक नहीं जा रही, normal से away जा रही है. So ये recall करो that when a ray of light traveling in a denser medium enters into a rarer medium, it bends away from the normal, dense to rare, away from the normal. And when angle of incidence increases, जैसे जैसे angle of incidence को हम बढ़ाते हैं, यानी ray of light बजाय ये इसका angle of incidence है, ये अगली दफ़ा बढ़ के ऐसे अगर हो जाए फिर ऐसे हो जाए. So when the angle of incidence increases, angle of refraction also increases. तो correspondingly angle of refraction भी increase होता है. Recall this thing and note this thing into your mind. Number one, a ray of light, it is one of the laws and one of the phenomena of refraction. A ray of light traveling in a denser medium. कोई भी dense medium कौन सा होता है जिसका refractive index कदरे ज़्यादा होता है दूसरे medium की निस्बत. जैसे कि you have the medium of glass and you have the medium of say oil, or you have a medium of transparent plastic, or you have a medium of water. So when a ray of light traveling in a denser medium enters into a rare medium, it bends away from the normal. You have to remember this thing, and please note it very, very thoroughly into your minds. And this is a kind of a law that whenever a ray of light enters traveling in a denser medium, enters into a rare medium, it bends away from the normal, always. And when angle of incidence increases, correspondingly the angle of refraction also increases. You have to note this thing also. For a particular angle of incidence, the angle of refraction becomes 90 degrees. जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ये ग्लास है, ये ग्लास जो है ये डेंसर मीडियम है, इसका ये ग्लास है, इट्स अ डेंसर मीडियम, ये बाउंड्री है ऑफ द सेकेंड मीडियम विच इज एयर. डेंसर मीडियम से रोशनी की शुआ इट इज गोइंग इनटू रेयर मीडियम, लाइटर मीडियम में जा रही है. लाइटर क्या मतलब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी निस्बत कम है. एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है और ग्लास का इज नॉर्मली 1.52. So from a denser medium it is going to rare medium. If you keep increasing the angle of incidence,
then the angle of refraction also increases. For a certain angle of incidence, the angle of refraction becomes 90 degrees. यानी रोशनी की शुआ ऐसे आई है और ऐसे चले गई और यहाँ पे 90 का जाविया उसने नॉर्मल के साथ बना दिया है. Such an angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degrees, then that angle of incidence is known as the critical angle. दोबारा गौर से सुन लो. The angle of incidence for which that causes the refracted ray in the red medium to bend through 90 degrees is called critical angle. यानी क्या मतलब इसका? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 का हो जाए उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. अगेन प्लीज पे अटेंशन. जैसे जैसे रोशनी की शुआ जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है. एक पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इतना बढ़ जाए तो फिर कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 का जाविया बन जाए. गोया कि रिफ्रैक्टिव रे जो है 90 के जाविया पे जा रही है, तो फिर उस पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल. एंड this is an I is equal to C, and that angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degrees is known as critical angle. And at this point, if you further increase the angle of incidence, मज़ीद उसको बढ़ा दें तो फिर जो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती और रोशनी की शुआ मुकम्मल की मुकम्मल उसी मीडियम में वापस आ जाती है. गोया कि it comes back into the same medium. गोया कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो जाता है. This angle of incidence for which the refracted ray does not exist, does not exit, does not go out, but it is turned back to the same medium is the phenomenon at which total internal reflection occurs. Okay, again I tell you, what is critical angle? The angle of incidence that causes the refracted ray in the red medium to bend through 90 degrees is called critical angle. When critical angle becomes larger than when the angle of incidence becomes larger than the critical angle, no refraction takes place. Then the entire light is reflected back into the denser medium, and this phenomena is known as total internal reflection. क्या कहते हैं इसको? Total internal reflection. And what is the phenomena? A phenomena in which the angle of incidence becomes larger than the critical angle, then no refraction takes place and the ray of light is totally reflected back into the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. अब total internal reflection जो है यह इसके लिए हम reflection कहेंगे, याद रखना. Total internal reflection because it comes back into the same medium. That is why I've written reflected ray. This was refracted ray. This was the refracted ray. And this is the reflected ray. It goes back over here. Now what are the conditions for which total internal reflection occurs? What are the conditions? You must remember, number one, the ray of light should travel from a denser to a rare. यानी रे रोशनी की शुआ कसीफ वसीले में से लतीफ़ वसीले में जाए. फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम. यानी ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है. ये ग्लास है शीशे में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 बनता है. वो एयर में जाती है, हवा में जाती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. तो फिर ये वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है. What are the conditions? Ray of light should travel from a denser to a rarer medium. ये आपने याद रखना है. This is the first condition. 2, the angle of incidence I should be greater than the critical angle. यानी जो भी उस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल बनता है उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा जाए. हर मीडियम का, every medium you know has its own critical angle. So for some medium it is say 42, for others it may be 41, it may be 48, maybe 43. So
the angle of the incidence should be greater than the critical angle. That means I should be greater than C. This is the second condition. Please remember this thing. And total internal reflection occurs only when light is directed from a medium of high index to a medium of low index of refraction. यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ उस वक्त होगी जब रोशनी की शुआ किसी ऐसे वसीले में से गुजरती हुई जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे वसीले के जिसमें उसने दाखिल होनी है. Total internal reflection occurs only when light is directed from a medium of high index of refraction. जैसे कि ग्लास है, यहाँ पर शीशे के लिए हमने लिखा हुआ है 1.52. शीशे के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.52. तो हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से ये जा रही है हवा में जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. It goes when light is directed from a medium of high index of refraction to a medium of low index of refraction. So I come again. Total internal reflection is one of the phenomena of light, and for this, to understand this thing, please recall one: a ray of light traveling in a denser medium. When it enters into a rarer medium, it bends away from the normal. आपने याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रोशनी की शुआ जब किसी डेंसर मीडियम में जा रही हो और दूसरे मीडियम जो है ना वो लाइटर मीडियम हो तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. 2. एंगल ऑफ इंसिडेंस एज व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो. जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाता है. अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट विच कॉजेज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 डिग्रीज इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का बन जाए, 90 डिग्रीज का बन जाए, उसे हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल है. अगर इस पॉइंट पे क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी इसका बनता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मज़ीद उससे बढ़ा दिया जाए तो फिर रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाती. इट कम्स बैक टू सेम. दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एंड इस फिनोमेना को लिए आपने जो कंडीशंस याद रखनी वो ये है. दीज आर द 2 conditions that you have to remember. Number 1, ray of light should travel from a denser medium to a lighter medium. 2, the angle of incidence should be greater than the critical angle. Those conditions, if you know these 2 conditions, the phenomena of total internal reflection will definitely occur. And the third thing to remember is that the total internal reflection occurs when light is directed from a medium of high index of refraction to a medium of low index of refraction. गोया के जो refractive index है इसका ज़्यादा हो और जो जिस दूसरे medium का उससे कम हो. Now please make good notes of this thing and draw diagrams. And number 2, please give good headings to it and try to understand this. If you find any difficulty, please feel free to call me at the numbers that I've given to you. Our next topic will be what are the applications of it. Thank you very much.